Dada Mithunda was the pride of Bengal. Now you've also become the pride of Bengal. Bachchan sir and dad and superstars from that generation are working more than us. If you have chosen to be an actor, then be ready to face rejection. Be ready to give them the entertainment they deserve. That is going to rest on your shoulder. Dad ने हमेशा मुझे कहा है because dad's memory is very good. तो I think 5 pages के dialogue बोलते हैं. Luckily, I have the same thing with dialogues. ऐसा ऐसा मेरे साथ तो ये कभी एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं है कि आई हैव बीन फेवर्ड ओवर एनीबडी एल्स जस्ट बिकॉज आई एम मिथुन चक्रवर्ती सन. I think nepotism has a very bad rep. Am I meant to be the? Am I meant to do this? Like I know I'm good at it, but am I meant to do it? Because Salman Bhai is definitely the one who has always, been there for me, and even Shah Rukh sir for that matter. मेरी most favorite film है फूल और अंगार उनकी जो ब्लॉकबस्टर थी और मैंने आई थिंक वो 37 टाइम्स देखी है. जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बेसमेंट में बदलते हैं. So, Mimo, welcome to Movie Fight. Thank you for having me here. And I have to say you this that खाकी दा बंगाल चैप्टर आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अमेजिंग है. Thank you. एंड मुझे पहला सवाल तो ये बता दो कि कितने अच्छे रिव्यूज मिले, सबसे बेस्ट वाला किससे मिला? आई एम तो वेरी ग्रेटफुल कि इतना प्यार मिल रहा है एंड बिकॉज इंटायर शो को चाहे वो कहानी हो शो की चाहे वो पार्ट 2 ऑफ द बिहार चैप्टर हो चाहे वो परफॉर्मेंसेस हो एवरी ओवरऑल इट्स बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द शो एंड आई थिंक सब कॉम्प्लीमेंट्स जो मिले सब लोग से आई एम सो ग्रेटफुल बट आई थिंक द वन विच स्टैंडिंग आउट जो मुझे बहुत अच्छा लगा जो दिल को छुआ वॉज दैट Dada Mithunda was the pride of Bengal. Now you've also become the pride of Bengal. Wow. So coming from his lineage and him Right. already being such a big example and start there and getting that same compliment from somebody, this makes my day. On that note, tell me कि मिथुन दा से क्या क्या उन्होंने देखा, पहले तो मुझे ये बताओ. उन्होंने देखा शो देखा? क्या बोला उन्होंने? एंड डैड इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. उन्होंने इतना ही कहा मीमो यू हैव डन अ गुड जॉब, बस इतना बोला. बट उतना भी डैड से मिलना इज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज डैड इज वेरी क्रिटिकल एंड बिकॉज उनको सब कुछ पता है एज एन एक्टर बीइंग एन सच अ ग्रेट एक्टर फॉर मोर देन 40 years. आई थिंक उनको A to Z से लेके 0 से लेके 1 million तक उनको सब कुछ पता है एक्टिंग के बारे में. Right. तो अगर उस सुपरस्टार ने उस लेजेंड ने अगर आपको कहा है कि यू हैव डन अ गुड जॉब, so it's a very very big compliment. Yes. Wow. So, can I say now that Mimo, do you feel that you have now got the due in the acting after this release? I don't think that I look at it that way because one should never feel that they have gotten the due. Because क्या होता है कि एक जो एक अपनी एक हंगर एक भूख होती है ना, that should always be there. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने रॉकी 3 देखी हो तो उसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन जो है इन रॉकी 2 ही बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन इन बॉक्सिंग. फिर रॉकी 3 में वेन एवर ही इज फाइटिंग अ नेक्स्ट अपोनेंट वो हमेशा जीतते जा रहे हैं. ही हैज़ 5 टाइटल डिफेंसेस, 9, 10, 20, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत फेमस हो गया है. और उसका ट्रेनर बोलता है कि कहीं ना कहीं यू बिकम सिविलाइज्ड, तुम सॉफ्ट हो गए बिकॉज तुम्हारे अंदर वो नहीं रहा अभी. तुमको लगा कि यार तुम सबसे अल्टीमेट हो, तुम्हें रिकग्निशन मिल गया है. यू हैव टू ऑलवेज बी दैट एनिमल, यू हैव टू ऑलवेज हैव दैट हंगर. तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आई हैव गॉटन माई ड्यू. I have with every project I have to prove that I'm getting my due. I'm always in the process of getting my due. वो mindset के साथ हमेशा मैं करता हूँ because I don't want to ever arrive. I want to keep arriving. Keep arriving. Yes. That's a great line. I think every actor should like कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात होती है that I should keep arriving. Absolutely. Being an actor. Absolutely. Always challenging, ever Yeah. evolving. Okay. Yes. Talking about your journey, how do you see yourself? How much you have evolved over the years? Man, a lot. I think in the last 17 years में it's been a very very important journey for my life to understand who I am. देखिए लोग जैसे हैं वो तो वैसे ही है. Some are good, some are bad, some are supportive, some don't care. But that's what life is. That's what people are. And that is who even I am as a person. I might care for somebody, I might not care for somebody. That's what life is. But how are you to yourself? वो in 17 years में मैं सीखा. So I was very critical back in the day, but now I've become very self-loving. I am very kind to myself now. Yeah, there are days when I don't want to do anything, I don't do anything. But then there are days when I want to do everything. So I just listen to myself and I'm my own best friend now. That is important That because is important, क्या होता है, of course, I'm very blessed for my family and my, my Right. siblings, my cousins, my wife, my friends. But I'm also very blessed
to have myself, because एक अंदर में एक आवाज जाती है ना, I need to be kind to him. I need to tell him that it's okay. And sometimes वो मुझे बोलता है कि यार चल कर, आज कुछ मत कर. So I listen to him. And sometimes he says, go, get up. There are days when I'll not wake up before 8. But then there are days when I'll wake up by 6. खुद ही. क्योंकि खुद ही मुझे मैं चाह रहा हूँ कि मैं करूँ. So I'm understanding myself every day. You know, being a veteran superstar's son, if I ask you about the industry, आपके हिसाब से इंडस्ट्री आपके लिए कितनी डिफिकल्ट या इजी रही है? See, I think that when we talk about the industry, Yeah. क्या होता है कि हम सब बोलते हैं कि यार when you are a star or when you are famous, everybody is working with you, and when you are not, nobody cares. But that's life. We should not take it personally. It's a very professional business, because somebody is putting money on you. Somebody is investing their money on you, believing that you will deliver the product. तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर. अभी वो तो देखिए, वो तो किस्मत की बात है. मैं तो नहीं कह सकता कि इस साल से लेके इस साल तक मैं फेमस होने वाला हूँ, या इस साल से लेके इस साल तक आई विल बी प्रोडक्टिव. वो तो है ही नहीं, वो तो किस्मत की बात है. सो आई डोंट थिंक यू शुड टेक एनीथिंग पर्सनली, बिकॉज if today people are recognizing me for my performance, they'll give me work. Tomorrow, if they don't think, they will not give me work. Today I've understood that. And I think everybody else also should understand that. That is the way life is. When Alexander was conquering the world, everybody respected Alexander. But then when Julius Caesar became the Caesar of Rome, everybody respected him. That is the way life is. You are replaceable. Every single day there is somebody out there who can take your place. Right. And that is just the way, that is biology, that is evolution. We came after the dinosaurs. We have evolved thousands of years, and something else will happen after 10,000 of years. So everybody is replaceable. So we should not take it personally. Just say that जो भी industry का है, it's their choice. Today, if they think that I can play a character, I'm very grateful. Tomorrow, if they don't, I'm like, it's fine, no problem. And when they talk about, when audience talk about nepotism and all, so what's your perspective on that? Mimo, क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? देखिए, nepotism has got a very bad rep, मैम. क्यों मैं बोलूँगा? Because I think it's all about nurturing. क्या होता है कि, see, I have been in auditions with boys and girls of the industry, and of boys and girls who come from different cities, different villages and cities with dreams and hopes. तो I understand everybody. ऐसा मेरे साथ तो ये कभी एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं है कि I have been favored over anybody else just because I am Mithun Chakrabarty's son. I got Khaki through an audition. I got Haunted 3D, the one which I'm doing now with Vikram, but I again auditioned for him, even though I worked with him before. So I got Jogira Sarara with Nawaz sir through an audition. So that is the process of an actor. It is not that just because I am his dad's son, मुझे काम मिल गया. So I think nepotism has a very bad rep, because क्या होता है कि हाईलाइट किया जाता है कि यार ये तो इसका बेटा है, इसकी बेटी है, इसको काम मिलेगा. नहीं, it is familiarity. I know people from the industry. They know my father, they know me, they know my mother, but they don't have to give me work. They're not obliged to give me work. वो उनका decision है. Now I have done Bengal chapter. I want to work with Sir Neeraj sir again. He might consider me, he might not consider me. It took me 14 years to do a sequel with Vikram Bhatt after Haunted. So that was his decision at that time. So it's not necessary that just because somebody's worked with you, they'll work with you again. That is their choice. That is their decision. So nepotism has a bad rep, according to me. Yes. And what was the most difficult phase of Mimo's life? The doubts. Because after, see, as I told you, I think an actor's best friend should be rejection, because that doesn't mean you're a bad actor. It just means that it is going to happen to you many, many times. Many, many, many times. But I have never doubted my capability as an actor, but I always doubted, not always, sorry, I have sometimes doubted कि यार, am I meant to do this? Like, I know I'm good at it, but am I meant to do it? Because every day आप जाओ, दरवाजे पे खटखटाओ और कोई दरवाज़ा ना खोले, तो कभी ना कभी आपको लगता है कि यार, maybe this is not the door I'm supposed to open. Maybe this is the door I'm not supposed to knock. As a human, वो tendency होती है हर किसी के साथ. सबके वो साथ. होता है. That's very natural. Correct. But then कहीं ना कहीं, वो जैसे आपको मैंने कहा, the voice in me, वो जो मेरी अंदर की जो एक आवाज़ थी, वो हमेशा मुझे कहती थी कि यार, don't quit. Don't, because you have
these beautiful dreams, तुम्हारे इतने सपने हैं, तुम्हारे इतने इरादे, तुम्हारे इतने इच्छाएं, उनको आप how can you just let go just because of a few years of struggle, you know? So yes, I've doubted myself, but I've never stopped believing in myself. बट यू नो शायद मिमो के इस आंसर से काफ़ी लोग देखने के बाद ये सोचें और बोलें कि मे बी ही इज सेइंग बिकॉज ही इज मिथुन चक्रवर्ती सन एंड ही Correct. हैज़ गॉट बैकअप एंड एवरीथिंग, बट देर आर पीपल जो इंडस्ट्री में आते हैं जिनको के पास वो बैकअप नहीं होता है, सो उनके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है टू सर्वाइव इन द Absolutely. इंडस्ट्री. Absolutely. So, if you have to say something to them, and ऐसे लोगों के लिए, aspiring actors, even the people who are already trying their best Yeah. to be in the industry, so what would Mimo say? See, I can tell you one thing, and one thing is that if you believe in yourself, that is the most important thing which can start your day, because it's not जैसे आपने कहा अभी, yes, I have a background, yes, people know me because of my mom and dad, तो but उसके आगे it has never helped me for anything, and neither I wanted to help me for anything. Yes, people will ask me about my father, but I have met casting directors who have been so kind and so generous, but they have always taken my audition. ऐसा नहीं है कि दे नो दे, अरे दादा कैसे है बोलना, मैं हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं सब, अच्छा आप ऑडिशन दे दीजिए. सो बिकॉज दैट इज़ द वर्क. इट इज़ नॉट कि हाँ आप उनके बेटे आइए आपको ले लिया, नॉट एट ऑल. सो in the end, the process will always be the same. Even for Bengal chapter, I did the audition. There were so many other boys who auditioned for it. I got lucky. Of course, I gave the best audition of my life, because as an actor, every audition should be the best audition of your life. But uske aage takdeer, and uske aage aapka talent. Because talent is something today with social media, you have seen there are so many people out there who have got so much of talent. Chahe whether it's juggling or whether it is cooking with your eyes closed, it can be a billion things you can be talented. Today the world has seen that. Today the world, pehle kya tha? Television was the only medium where you could see like 50-60 people in some reality show कि हाँ चलो यार he or she is talented. Today everybody can open their own profile and show how talented they are. So talent will never go to waste. Talent will always be appreciated. It is only about the right time and the right place. I believe in that. So coming back to your question, Yeah. it is tough, it sucks, that's what I can say. But True. you have to keep at it. Get up, dress up, show up. करना ही पड़ेगा. Because I cannot expect that I'm lying down in my sofa watching a video on YouTube and suddenly somebody will think of me. No, I have to go out there. I have to tell them, take me, I am here, I'm standing in front of you. That is my job. I know it's tiring, I know it's frustrating, I know it's the same repetition, but उस repetition से ही perfection बनता है. You become so good at it as a muscle memory, like how we pick up the cup in a certain way, it's muscle memory, right? Right. So even this becomes a part of your muscle memory that you have to keep doing. And 9 out of 10 times you will never get a response, but maybe the 10th time is when you will get it. So that's what I will tell them. एंड अगर मैं बात करूँ योगिता मैम की, मिथुन दा की, सो बीइंग अ पेरेंट, यू नो, हर पेरेंट्स का ये होता है अपने बच्चों के लिए कि जब बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट करती है माँ बाप को भी. Of course. इन योर केस इफ़ आई आस्क अबाउट बोथ ऑफ देम, सो वो फेस कैसा था? क्या बेस्ट चीज़ जो है दोनों ने आपको बोली हो? See, they have, even today they keep supporting me, their parents, and मेरे भाई बहन, मेरे mom dad, उन्होंने बस एक ही चीज़ कही कि यार, see, if you have, very practically उन्होंने मुझे ये बोला कि you have decided to be an actor, correct? Yes. So you have to be ready for the pros and the cons. We are always here. Today, tomorrow, you want to come and hug us because your show is a success, we will hug you. Tomorrow, you want to come to us and cry and saying that, nothing is happening, we are here to listen to you. But you have to go through it on your own because it's your choice. We never forced you, we never will. If you have chosen to be an actor, then be ready to face rejection. Be ready to give them the entertainment they deserve. Right. That is going to rest on your shoulder. Whatever the effect is going to be, we are here for you. But the good and bad, you have to accept it. That acceptance should come from you first. So, मतलब क्या मिमो ऐसे टाइम टू टाइम मॉम डैड के पास जाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं?
We talk about everything Yeah. today. Yeah. I mean, my parents have become my best friends today. आज उनके साथ सब कुछ मैं बात करता हूँ. And we talk like friends. कि यार अभी with after khaki, we sit and then I tell mom and dad कि यार first time career में इतना appreciation मिल रहा है. So they are happy. You know? Correct. But they don't let me be taken away by it, which is something I've learned over the years. कि यार काम है, profession है, responsibility है, but it is profession. It is not my life. It is a part of my life. Like I'm many more things than just Mimo the actor. I'm Mimo the brother, Mimo the son, Mimo the husband, Mimo the brother to my pet dog who plays with me. I'm a friend to my friends. So there's so many more things Mimo is. So that is very important. Never to lose yourself in your obsession. I love entertainment. I'm absolutely obsessed with it. But I'm never going to get drowned in it. That's what I believe. And who is that one friend from the industry who is there with you, or a mentor, maybe I can say, since the beginning, who is there? Many people have been there, but Salman Bhai is definitely the one who has always, been there for me. And even Shah Rukh sir, for that matter. They have really, Abhishek Bachchan is there, Arya Babbar is there, who has been like a big brother to me. John Abraham, I remember on the sets of Elan, he was my gymming partner, Arjun Rampal and John Abraham. Like, मैं तो जब उनके साथ वर्कआउट करता था, आधे टाइम तो मैं यूफोरिया में ही था कि यार इतने बड़े स्टार्स मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, you know what I mean? So they've always been very, very supportive. But there is one friend of mine who's not from the industry. He's an HR head. So Acha. Bhushan Tripathi. So this is a shout out to you. So he has been my bestest buddy in the whole wide world. Like we are from different parallel worlds. Like we don't have anything in common. The only one thing we have in common is our love for each other. As brothers. So he has always been there for me. Through thick and thin. So the one true friend, I think it's Bhushan. And best advice जो शाहरुख और सलमान से कभी मिली? उन्होंने यही बोला है, be yourself. The world will try to change you, don't let it change you. Because people will love you for who you are. People will not love you for what they make you. They'll advise you, they'll tell you what to do. Because everybody is entitled to their own opinion. जैसे आपका opinion matters to me. But I cannot be consumed by that opinion. कि yes, शायद मैम को लगा कि मुझे लेफ्ट के अलावा राइट जाने चाहिए था. आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट आई कैन नॉट लिव विद दैट थॉट कि यार आई शुड हैव गॉन राइट. सो दैट्स व्हाट दे से कि यार यू विल ऑलवेज बी टोल्ड व्हाट टू डू. रिस्पेक्ट इट, गिव देम द रिस्पेक्ट दे डिजर्व, बट इन द एंड डू व्हाट you think is right, because people will admire you for that. So that's what I live by. Lovely. And few minutes back you mentioned that एक टाइम के लिए ऐसे लगा कि शायद I am not meant for this. तो उस वक्त क्या ऐसा कुछ जहन में कभी ये सोचा था मिमो ने कि मे बी एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए? कभी ये एक थॉट आया था? थॉट तो आया था ऑफ कोर्स, बट समथिंग टू डू विद फिल्म्स ओनली. बिकॉज मुझे लगा चलो ठीक है, एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, आई कैन मे बी टर्न इनटू अ प्रोड्यूसर समडे. अगर प्रोडक्शन नहीं तो डायरेक्शन कर पाऊंगा, अगर डायरेक्शन नहीं तो स्क्रिप्ट राइटर बन जाऊंगा. बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ, आई रियली एडमायर मार्टिन लूथर किंग. ही फॉट फॉर द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट. तो उनका एक बहुत फेमस कोट है, बोलते हैं इफ यू कांट रन वॉक, इफ यू कांट वॉक क्रॉल, बट कीप गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो आई एम लाइक, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये ट्राई करता हूँ, बट समथिंग टू डू विद व्हाट आई लव. आई लव मूवीज, आई लव एंटरटेनमेंट, आई लव डूइंग दिस फॉर द पीपल. तो कहीं ना कहीं आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ डूइंग समथिंग विद इन दिस फील्ड. और कभी ऐसे खुद पे गुस्सा भी आता था जब लो फेज चल रहा था या ऐसा? तो बहुत क्रिटिकल था अपने आप से, बट टुडे आई एम, जैसे आपको मैंने कहा कि I have been in that phase where I've always told that it's been my fault. मैं अपने आप को कहता था कि यार ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज मेरी गलती है. right. टुडे मुझे समझ में आता है ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इट्स नॉट मेंट टू बी, इट्स बियॉन्ड माय कंट्रोल. पहले क्या होता है, वी ऑलवेज थिंक दैट Now you have it's made our peace fault. with that Yeah. situation. more than peace, I've accepted कि यार there are Accepted, things, yes, right. there are things. देखो मैं क्या कर सकता हूँ, I can get up in the morning, okay, Right. I can go for my run, I can have my coffee, I can have my breakfast, I can go for the audition and I can give the best audition in the world. That is my job, that is it. I cannot determine whether I will get it or not, that is beyond my control. Correct. Today I understand that. 5 years ago, 8 years ago, 10 years ago, it didn't make sense to me. कि क्यों हो रहा है, शायद मेरे वजह से हो रहा है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. बट टुडे आई नो कि नहीं भाई, आई एम गिविंग माई बेस्ट. You need to tell yourself whether are you giving yourself the 100% it needs. If I am sleeping every night thinking that I've given my best, that's all that matters. Nothing else matters. So today I understand that.
एंड टॉकिंग अबाउट योर नेक्स्ट फिल्म हॉन्टेड 3D, सो कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं था, बट हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट इस साल आने वाली है, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेप फ्रॉम हॉन्टेड जो पहले आई थी. इट्स टेकन 14 years फॉर अस टू कम बैक विद द सीक्वल, एंड समटाइम्स मैं खुद शॉक हो जाता हूँ, खुद हैरान हो जाता हूँ in a good way कि आज की जो जनरेशन है, whenever like I'm a very big gamer, okay, so I stream live and I talk to my fans and everybody who comes and talks to me, boys and girls younger than me who have not even, they were like 2-3 years old जब Haunted आई थी, उनको भी Haunted पता है, उन्होंने भी Haunted देखी है, उन्होंने बोला है कि उससे गाने बहुत अच्छे हैं, कहानी बहुत अच्छी है. So आज भी मुझे Haunted के लिए बहुत प्यार मिलता है. So for us making the sequel at this time was very very important because we owe it to the fans. राइट. तो अगेन सही टाइम पे सही वक्त पे 14 years लगे, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम व्हेन द सीक्वल इज कमिंग. Correct. And in real life, have you ever faced anything similar to that? आई वुड लव टू. आई एम अ वेरी बिग, मैं मुझे बहुत शौक है. सच्ची मतलब कभी नहीं? कभी भी नहीं. मैं ऐसा कभी Okay. ऐसा सुपर नेचुरल Natural एनकाउंटर कुछ अब नहीं तक तो नहीं हुआ है, बट मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ. आई लव हॉरर, एवरीथिंग टू डू विथ हॉरर, चाहे वो हॉरर फिल्म्स हो, चाहे वो स्लैशर फिल्म्स हो, चाहे वो थ्रिलर्स हो, इंग्लिश, हिंदी, कोरियन, आप कोई भी लैंग्वेज की बोल दो, मैं सब हॉरर फिल्म्स देखता हूँ. आई एम अ वेरी बिग फैन. तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ हॉरर लेगेसी इन इंडिया, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. बट अभी तक तो ऐसा कुछ सुपर नेचुरल इंसिडेंट नहीं हुआ. अगर होगा तो मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगा. हाँ, नाइस. ओके. ये एक क्योंकि मिथुन दा से हम ऐसे ना मिलते नहीं है, मुलाकात होती नहीं है जनरली, बट इफ आई टॉक अबाउट हिम राइट नाउ, करंट सिचुएशन अगर मैं बात करूँ उनकी, हाउ इज ही डूइंग, व्हाट ही लव्स टू डू नाउ अ डेज, एवरीथिंग, कैन यू जस्ट टेल अस बीइंग अ सन? he is a working machine. वो कभी रुकते नहीं. He is right now doing Delhi Files with Vivek Agnihotri, जो अभी I think August 15 को लगने वाली है, वो है. He is doing dance, Bangla dance, which is in Bengal. He is doing that. Then he is now in talks with with Ahmed sir for I think Welcome to the Jungle. Then he is doing Fauji with Prabhas, the Telugu film. So he's just busy. That's all I can say. Right. I mean, I think Bachchan sir and dad and superstars from that generation are working more than us even today. So I think he is just he is a man who never stops. He just keeps going on and on and on. He's very busy. That's all I तो can घर पे भी अपॉइंटमेंट तो नहीं लेना पड़ता मिलने के लिए? नहीं, but वो he hardly comes home. comes home, हाँ, yeah. because he's traveling and now we have opened a hotel in Bangalore. तो उधर भी वो जाते रहते हैं. हाँ. So he's always busy. He's always, because he's been working for the last 40-45 years. How can you tell someone to just stop doing what they're doing? By default, they want to do it. So he's touchwood. He's healthy and he's working. एंड मिथुन दा की अगर एक फिल्म मिमो ने सबसे ज्यादा देखी हो तो वो कौन सी है, फेवरेट वाली, और कितनी बार देखी है? मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है फूल और अंगार, उनकी जो ब्लॉकबस्टर थी, और मैंने आई थिंक वो 37 टाइम्स देखी है. 37 टाइम्स जो मुझे याद है. आई थिंक द नंबर मस्ट बी हायर, बट यस, फूल और अंगार. बिकॉज अगर मुझे मौका मिले तो आई वुड लव टू प्ले दैट कैरेक्टर अगेन. अगर रीमेक हो तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ फूल और अंगार वंस अगेन. वाह, क्या बात है. ऑन दैट नोट, इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक सरप्राइज है. यहाँ पे कुछ फेमस डायलॉग्स हैं. ओके, यू हैव टू टेल मी. एक तो आपको उस अंदाज में थोड़ा वो डायलॉग को बोलना है दादा के. ओके, और कौन सी फिल्म से है ये भी बता दो. जख्म तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं. जख्म तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं. This is from, I don't know from which film this is. डिस्को डांसर. Disco Dance. Ah, yes, that comes before the song. Yes. तो बोल के दिखाओ. तो बोलो ना अभी आपको, वापस बोलो मुझे क्या डायलॉग है. जख्म तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं. जख्म तो भर जाते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं. जिनके घर शीशे के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं. जिनके घर शीशे के होते हैं वो कपड़े बेसमेंट में बदलते हैं. गोलमाल 3 है ये. Yes. आपने हाउसफुल बोला, so I got confused. Golmaal 3, yes. Golmaal 2 or 3? 3. Yes. It was Golmaal 3. With Ajay sir and they're making, yes. With Prem Chopra sir, the scene. राइट. ओके. इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता. Guru? Is it with Abhishek Bachchan, Guru? नहीं, give me another hint. Which one is it? उसी फिल्म का मैं दूसरा डायलॉग भी बोल देती हूँ, मे बी आप रिकॉग्नाइज कर लो. मैं गरीबों के लिए हीरो हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए विलेन.
नाम है मेरा शंकर, हूँ मैं Oh, damn. गुंडा नंबर Gunda, 1. अरे Gunda. My God. You know what? Honestly, Yeah. regarding Gunda, I've only seen Dad's portions later because first जो starting में जो villains की जो होती है ना introduction, मैंने वो ज़्यादा देखा है. So I've not seen that much of Gunda. Yeah. But I've been obsessed with Phool और अंगार dialogue. So अगर आप मुझे उसका प्लीज नहीं आप बोलो, नहीं याद है? वो तो पार्ट 2 के लिए बोलूंगा मैं, अभी नहीं बोलूंगा. यस नहीं, बट आप कौन सा लास्ट वाला कौन सा था? लास्ट वाला वाज दिस वाज नॉट द लास्ट वाला, बट उसी फिल्म का दूसरा, इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता है. हाँ करेक्ट. इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता. गुंडा से. एंड ओके, लास्ट वन. इज्जत, जिल्लत, शोहरत और मौत ऊपर वाले के हाथ में है. इज्जत, जिल्लत, शौहरत और मौत ऊपर वाले के हाथ में. ओके, I give दैट the dialogues वाज नाइस. I give the dialogues nicely, yes. Because you know what? Speaking of dialogues, ये thing, so I want to give you a little snippet. Dad ने हमेशा मुझे कहा है because Dad's memory is very good. तो I think 5 pages के dialogue बोलते हैं. Luckily, I have the same thing with dialogues. Like when I read dialogues, Right. तो I think within 1 or 2 readings, I remember the dialogues. तो वो I think I've gotten from Dad. जो आपने वही जो बोला dialogue का, तो I'm sorry I got the films wrong, but yes, I remember the dialogues very clearly. और कोई एक फेमस वाला डायलॉग या फेवरेट वाला डैड का बोलना डैड का तो मुझे आई थिंक हिज मोस्ट फेवरेट इज कोई शक. कोई शक. So yes, so I'm like whenever कुछ भी कोई बोलता है तो बोलता है कोई शक, you know that way. So yes, of course that's from Ashanti. So yes, that I remember. Okay, so that was lovely and great chatting with you, Mimo. Thank you. Thank you so much for being with us Thank you here. for having me here. Thank Thank you.